In the Delhi excise liquor policy scam and case, the Supreme Court has granted bail to Aam Aadmi Party leader and former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia, in the now scrapped excise policy irregularity case after 17 months. He has been granted bail by the Supreme Court. He has been granted bail in both the CBI and the ED cases by the Apex Court. In the case related to the Delhi excise policy, the court has granted regular bail to Sisodia in cases that were probed by the Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate in connection with the now scrapped policy. Now Sisodia will walk out after the jail after a wait of 17 months. A bench of Justices B.R. Gawai and K.V. Vishwanathan had directed Sisodia to furnish a bail bond of 10 lakh rupees with 2 sureties and surrender his passport and report twice a week on Monday and Thursday before the investigative officer. It is said that he shall not make any attempt to influence the witnesses or tamper with the evidence that is on record. The Apex Court has reserved its order in the case on August 6. Viewers, now joining me on the broadcast is my colleague Ayush. Ayush, a big breaking as we are tracking at the moment, and after a wait of 17 months for the Aam Aadmi Party, the senior leader and of course the former Deputy Chief Minister Manish Sisodia will walk out of the jail. The order was reserved by the Justice on August 6th in the Rouse Avenue Court, and now it seems like a big victory in the Aam Aadmi Party, as after, the Supreme Court had granted bail to Aam Aadmi Party convener, Delhi Chief Minister. Now it's Manish Sisodia after a long wait. Yes, Simran, in a significant development today, the Supreme Court allowed bail of former Delhi Chief Minister of the party leader in relation to the liquor policy case of Delhi. The court allowed the bail applications filed by Sisodia in both CBI and ED cases, considering the delay in commencing the trial in the liquor policy case. The court stated that they find that on account of long insertion running around 17 months and trial having not been commenced, the appellant has been deprived of the right of speedy trial. The court noted that there is no remotest possibility of trying being compelled in the near future, considering that there are over 400 witnesses and thousands of documents. To keep Sisodia under custody in such a scenario would result in grave violation of the fundamental right to personal liberty. The court said that the appellant was having deep roots in the society and hence he was not a flight risk. Also, most of the evidence in the case are documentary in nature, which are already collected. Hence, there is no possibility of tampering as regards the apprehension of influencing or intimidating witnesses. All right, Ayush. I'll request you to kindly stay on with us as we will continue to get more details from you as far as the bail that has been granted by the Supreme Court in this matter is concerned. I'll also want to get a word from the former BJP MP Ramesh Viduri on the bail that has been granted by senior Aam Aadmi Party dignitary and also former Delhi Chief Minister Manish Sisodia in the now scrapped Delhi excise policy. रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से हम देख सकते हैं 17 महीने के वेट के बाद आम आदमी पार्टी को अब ये राहत मिली है, और इस तरीके से जो एक्साइज पॉलिसी का जो केस है जिसपे आम आदमी पार्टी निरंतर सेंट्रल गवर्नमेंट को और बीजेपी को घेरे रही थी और बोल रही थी कि जो केसेस में फैब्रिकेशन और एलिगेशंस हैं वो झूठे हैं, तो इस समय मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों की इन्वेस्टिगेशन में एक बेल मिली है और 17 महीने बाद का ये वेट है। किस तरीके से बीजेपी देखती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। देखो क्या है, आम आदमी पार्टी के जो लीडर बोल रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, खींची बिल्ली खम्मा नौची जैसी स्थिति है। हमारे देश का जो लॉ है उस लॉ में प्रोविजन है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी, अगर ऐसे जो गुनहगार है उनको बेल दे दी जाएगी तो वो क्या करते हैं, बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, सत्ता में रहकर पावर में जाते हैं। आज तक इस देश में करप्शन के मामले में कभी भी सत्ता में बैठे लोगों को सजाएं क्यों नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई? केवल लालू को छोड़कर, एक दो लोगों को छोड़कर लोग क्यों बरी हो जाते थे? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही गवाह टूट जाते थे। सरकारें बदल जाती हैं, दूसरी सरकार आई, दूसरी सरकार उसको रिलीफ दे देती थी। तो पीएमएलए के तहत ये कानून में प्रोविजन डाला गया पार्लियामेंट में कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी तब तक मुलजिम को बेल ना दी जाए, वरना वो इफेक्ट करते रहे, भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा।
तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन जो ईडी में कहा है कि अब ट्रायल शुरू होना है, इन्वेस्टिगेशन दे हैव कंप्लीटेड। तो अब इन्वेस्टिगेशन अगर वो कंप्लीट कर चुके हैं तो स्वाभाविक है बेल हर किसी को होती है। बेल होने का मतलब ये नहीं है कि वो बेगुनाह हो गया है। अभी ये जो कह रहे हैं एक पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, झूठा डाल रखा है, अरे फिर लोअर कोर्ट हाई कोर्ट ने क्यों नहीं पिछली? तो अगर अब ये लोअर कोर्ट में भी लगाते इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद तो लोअर कोर्ट भी बेल दे देता जी ट्रायल के दिन। और अगर ये इतने शरीफ आदमी हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर सोमवार को थाने जाना पड़ेगा। पासपोर्ट जब्त कर लिया है, अरशद मेहता जैसे लोगों की तरह, नीरव मोदी जैसे लोग देश छोड़ के ना भाग जाएं, इतना पैसा लूटा है तो पासपोर्ट जमा हो गया। तो इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि लीकर पॉलिसी में इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है? तो ये एजेंसियां जांच कर रही हैं जी, तो बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के बाद बेल स्वाभाविक होती है। परी थोड़ी हो गया जो लड्डू बांट रहे हैं और वो मना रहे, खुशी मना रहे। ये है। All right. Thank you, Mr. Ramesh Biduri. As we are getting more details and latest developing inputs on the bail that has been granted by the Apex Court in the now scrapped Delhi liquor policy to a senior Aam Aadmi Party leader and former Deputy Chief Minister of Delhi, Manish Sisodia. And it is indeed after 17 months that Manish Sisodia will walk out of the jail, and the order by the Justice of the High Bench was reserved on August 6th, and it is after a long wait for the Aam Aadmi Party that the bail has been granted in the CBI and the ED. As far as the response by the BJP on this development is concerned, it is indeed making a comeback on the allegation, saying that granting of the bail does not essentially equate to them being freed of the allegations and accusations which have been levelled in the case. The allegation saying that granting of the bail does not essentially equate to them being freed of the allegations and accusations which have been levelled in the case. Joining me on the broadcast is Congress MP on this very development that we are tracking at the moment. While we also understand, sir, that the bail has been granted to Delhi former Deputy Chief Minister Manish Sisodia, it is indeed also starting a fresh political slugfest between the BJP and the AAP, because the Delhi excise policy has been at the center stage of a debate ever since the allegations were framed. Your comments? So the bail is a right unless until a person is convicted, cannot be kept in jail for indefinite time. And those who are involved in bigger corruption and which were labeled by BJP itself, like many are there, Mr. Ajit Pawar, Subhendu Adhikari, Himanta Biswa Sarma, Narayan Rane, Ashok Chauhan. So what happened, most of them have been exonerated. See, it's a political vendetta, nothing else. And the Supreme Court was apt to grant the bail if BJP is trying to harass, demoralize, dismantle the opposition. This is called a dictatorship. However, the bail has been granted, though it is late. See, what a person, after the trial you keep in the court, but before that, keeping anybody in jail for 17 years, for accuses that, of course, he will destroy the evidences. How long is one to collect evidences? Maybe then lifelong one can say that there are evidences to be collected, or the person who is involved or who is in center stage can influence the evidences. Then it, of course, everybody will be in the jail. So what happens and what is the rule of law? What is the justice, natural justice? He was denied natural justice. Today, however, been granted the bail. Justice has come to him, but still late. This is one part. And let the conviction trial go on, and afterwards, if it is convicted, all right. All right, Mr. Udit Raj, thank you for joining us on the broadcast.
and also giving us more details and his response as far as big relief for Manish Sisodia is concerned. Joining me on the broadcast right now is also senior lawyer Rudra Vikram Singh of the Supreme Court. We appreciate you joining on the broadcast, sir. There is indeed a big relief for Manish Sisodia, who's a former Deputy Chief Minister, and as far as the Aam Aadmi Party is concerned, and they have been also making the politics of the Aam Aadmi Party against the BJP on the allegations that have been levelled against Manish Sisodia in the now scrapped Delhi excise policy. While the court has given a few conditions after granting him bail after a wait of 17 months, what remains to be seen is how now the AAP strengthens their further strategy as far as the functionary of the Aam Aadmi Party is concerned, because clearly now Arvind Kejriwal continues to be in Tihar jail, but indeed this is a big relief for the Aam Aadmi Party. There may be politics, and obviously the Aam Aadmi Party will play the politics after Manish Sisodia's bail. But people have to understand that the bail was granted just because there is a delay in trial. The Honorable Supreme Court has, while delivering the judgment, has clearly categorically said that there is a indefinite delay in trials, and you cannot put anyone behind the bars for indefinite period. That is the rule of bail. And the court has also observed there is a triplet test while giving bail to anyone. So first, that there should not be any tampering of evidences. So court has observed that almost all the evidences have been collected, so there is no possibility of tampering. There is no flight risk, as was the Deputy Chief Minister and has deep roots in the society. And there is no harm to the witnesses as well, because all the testimony of the witness has been done, and because the Manish Sisodia is a political man, so there is no harm. So considering all these three facts, and the fourth fact is the speedy trial, court has observed that the right of an accused in a speedy trial, and prosecution is not able to run the trial speedy, because you can understand the problem of the prosecution as well, because there are so many accused in this matter. So prosecution is filing additional charge sheet, supplementary charge sheet, 4 or 5 supplementary charge sheet has been filed matter. So that is why Manish Sisodia was granted bail, not on the merit, but just because that delay in trial. All right. Mr. Singh, thank you with all these details now that you have given us at this given point. Joining me also on the broadcast is senior journalist Himanshu Bhatt via Zoom. Sir, we appreciate you joining on this broadcast. On the now scrapped liquor policy, it remains to be seen that it's a big development that we're tracking at the moment, and a big relief for the Aam Aadmi Party as far as the allegations in the now scrapped policy is concerned, that, remember, has been at the contention of the political controversy between the Aam Aadmi Party and the BJP. But what are the conditions imply that have been given by the court, and what lies ahead for the Aam Aadmi Party and now the Manish Sisodia while we go forward in this case? As the speakers before me have made it amply clear, it's not on the merit of the cases, but on the delayed trial. Because the trial is delayed, people must not be kept in the bar. And more so with this person being for 17 months in the jail. Whatever evidences were needed to be collected has already been done. So he's not going to tamper with them or other things. So releasing him does not harm anyway the case. And the conditions which are put in, that needs to be looked at. That he will also be again, strictly barred from, and to talk anything about the court matters in the public and this and that and all. And which, Aam Aadmi Party's perception, they will go to the public and say, see, our stand has been vindicated. But which is not the case. It's basically, it's the thing, it's something like, the trial is delayed, and so one must be given a relief. After 17 months of being in the jail, a person is given a relief. That's all it is. It should not be looked at with any other prism. Politically, parties will try and play their card.
that see our stand is vindicated, we did nothing wrong, no money was found, no money trail was found. See, for all that, the court has seen the other side, supplementary charge sheets and the charge sheet, and more so, Manish Sisodia at that time was considered the responsible person for this policy. But now, since while in supplementary charge sheet, they've already said that Arvind Kejriwal is the main man. Now, when that is the case, after 17 months, when the trial is not taken place, why do you want to keep other people behind the bars? Now, that also is a contentious issue. So, politically, if you see, AAP will try and score points, brownie points, but it's not going to cut much headway. Because basically, after 17 months, people's memory, in a democracy, sorry to say, it's very, very short. People, now they will try and go and drum up the beat again that excise policy, we did nothing wrong with the liquor and this and that and all. But that's not going to work. That's not going to work. And whatever it is, politically they might do, they might talk. But the court must have put the restrictions, must have put the conditions that you cannot do this or you cannot do that. If they are going to infringe on, the other side, goes back to the court, then again the party will be in a suit. So that way I see, giving a bail is on a human ground, and a court, the way justice is delivered is, justice delayed is justice denied. That's what we have been saying. And here, the trial doesn't seem to start. Trial may take a few months more again to start. And for all that time to keep this man in the jail. So all right, Mr. Butts, I apologize to interrupt you at this point of time. We'll continue to get your voice, of course, back on the broadcast. Joining me at the moment is BJP National General Secretary Dushyant Kumar Gautam on this important development that we're tracking at the moment. Mr. Gautam, what has been right now BJP stand on the court's observation saying that there has been no tampering of the evidence, and of course the allegations against Sisodia are frivolous. So the court observes that there has been no chance of the trial being completed on time already, and these of course made the basis for granting the bail. दुष्यंत जी, देखिएगा कोर्ट का जो निर्णय है स्वागत योग्य है और उनको जमानत दी गई है, उनको कोर्ट ने बरी नहीं किया है। कोर्ट ने उनके प्रति सहानुभूति मानवता के तौर पे व्यक्त की है कि उनको 17 महीने हो गए हैं, इस कारण से वो पत्नी बीमार है, इस कारण से छोड़ा गया है। कोर्ट ने अब भी उन पे शंका व्यक्त की है, उनका पासपोर्ट रखा गया है कि भाग ना जाए वो, उनके बारे में साफ साफ प्रूफ है उनके पास में, खाली इसलिए छोड़ा गया है कि खाली वो जमानत पे है और कोई भी प्रूफ ऐसा नहीं दे पाए कि वो गुनाह नहीं किया है। जिस समय कोरोना काल के अंदर देश दिल्ली त्राही त्राही मचा रही थी, उस समय वो एक बच्चे के हाथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का षड्यंत्र रच रहे थे। ये दिल्ली का रेवेन्यू कम करने का काम किया है उन्होंने। लेकिन यहाँ पार्टी को एक नाटक और ड्रामा करने का एक आदत सी बनी गई है ना, इस प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो बरी हो गए हैं, जो कि कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ये बरी नहीं हो रहे हैं, आपको जमानत मिल रही है। और क्योंकि ये केस ऐसा है जिसमें 9 साल 6 साल की सजा हो सकती है, 3 साल आपको हो भी सकते हैं और आपको 17 महीने इसलिए दिया गया है खाली मानवता के आधार पर, कोई गुनाह से उनको मुक्त नहीं किया गया। लेकिन ये नाटक और ड्रामा इनको बंद करना चाहिए। आज भी लोग कटघरे में खड़े हैं, गुनाहगार हैं आज भी, और सजा उनको जिस प्रकार से वो एविडेंस है उनके अगेंस्ट, वो सजा उनको मिलेगी ही मिलेगी। मुझे लगता है कि नाटक और ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कंडीशनों पे उनको, क्योंकि जैसे गुनाहगार को होता है और गुनाहगार को कंडीशनें लगाई, शर्तें लगाई थी, उस पर जमानत मिली। दुष्यंत जी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं आप, अगर हम बोलें कोर्ट की बातों को, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को लें, तो ये कहा गया है कि सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया को स्पीडी ट्रायल के लिए राइट नहीं मिला है, उनका जो राइट है वो डिप्राइव किया गया है। और आम आदमी पार्टी का भी यही कहना है कि उनके ट्रायल ना शुरू होने के कारण भी एक ही स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस टैम्पर नहीं हुआ है, तो बेल इसीलिए भी दी गई है। तो इससे आपको लगता है कि एक्साइज पॉलिसी में उनकी इन्वॉल्वमेंट को लेकर उन जो केस है वो सबूत नहीं मिल पा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का जो ये निरंतर कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल वेलकम भी करते हैं।
और ये तो उनका दो मुंह चेहरा है। अभी अब थोड़े दिन पहले वो कोर्ट को ही गुनाहगार बता रहे थे, सॉरी बोल रहे थे, कोर्ट का निर्णय नहीं करना चाहिए, आज कोर्ट उनको अच्छी लगती है। वो मौकापरस्त लोग हैं, उनके बोलने पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। झूठ का पुलिंदा है वो पूरा का पूरा। और ये मान के चलना चाहिए कि 17 महीने भी कोर्ट ने उनको रखा है और अभी जमानत पे छोड़ा है उनको। कोर्ट ने ही रखा है, कोई किसी सरकार ने नहीं रखा है उनको। इसलिए कोर्ट की नजर में आज भी वो गुनाहगार है। प्रूफ और तथ्य होते हैं, जब भी कोर्ट निर्णय नहीं दे पाती, जब भी जमानत नहीं दे पाती। इसलिए उनको ये ध्यान रखना चाहिए, उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। और उत्साह के अंदर और सच्ची सही सही बातें भी निकलेंगी। क्या दिल्ली की जनता नहीं भूल पाए? भूल गई है उस बात को, किस प्रकार से स्कूलों के आसपास में ठेके खोलने का काम किया गया, किस प्रकार से मंदिरों के पास ठेके खोलने का काम किया गया, 25 साल से घटाकर 21 साल की दारू पीने की उम्र को कराने का काम किया गया। दिल्ली की जनता को जो रेवेन्यू मिलना चाहिए, विकास मिलना चाहिए, उसके विकास की बजाय ये स्कूलों के बाहर जो कहते हैं हमने शिक्षा नीति दी है, आज दिल्ली की हालत क्या है? प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है, आपका जो उसका रिजल्ट है वो डाउन होता जा रहा है। दिल्ली पानी पानी के लिए त्राही मचा रही है। खाली प्रेस तो कॉन्फ्रेंस बीजेपी, करना और दुष्यंत अपना आपको- दुष्यंत जी, क्या बीजेपी ये मानती है कि फिर आम आदमी पार्टी के लिए ये जो अभी कोर्ट का निर्णय आया है, जो ऑर्डर मिला है 17 महीने की वेट के बाद, क्या बीजेपी ये मानती है आम आदमी पार्टी के लिए ये किसी भी तरीके से विक्ट्री नहीं है, उनकी जीत नहीं है? कोई विक्ट्री नहीं है, गुनाहगार है। जमा उसके पासपोर्ट रख लिया, कहीं भाग ना जाएंगे। आप देखिए कोर्ट के निर्णय देखिए, 10 लाख के मुचलके पे छोड़ा गया है उनको और अनेकों अनेक कंडीशनें लगाई गई हैं उस पर। गुनाहगार है, इसीलिए कहा जाता है पासपोर्ट जमा कराइएगा आप। इसमें कोई खुश होने की आवश्यकता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये नाटक और ड्रामा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और देश की, दिल्ली की जनता के सामने वो गुनाहगार है, हमारे सामने नहीं है। दिल्ली की जनता के गुनाहगार है। उन्होंने शिक्षा नीति का बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने दारू बेचने का काम किया है, उन्होंने अनेकों ने गुनाह उनके पक्ष से। पानी पीने का पानी नहीं मिल रहा इतना। आप तो डिप्टी सीएम थे, आप तो डिप्टी सीएम होने के बावजूद, क्योंकि आपका सीएम तो कहीं पे सहन ही नहीं करता था। सीएम तो बहुत नाटक और ड्रामेकार, वो आज भी जेल के अंदर पड़े हुए हैं। आप इसके बाद में अगर ये अपने आप को उत्साहित महसूस करते, बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली की जनता का। ऑल राइट। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.